Hello students, I am Meenu, Assistant Professor in GCW Bhavani Kheda. Today we are going to discuss about Register Transfer Language. Now, firstly we have to discuss about a digital system. Basically, a digital system is an interconnection of digital hardware modules, and the modules includes registers, decoders, arithmetic elements, and control logic. And when the various modules are interconnected with the common data and control paths to form a digital computer system. Or we can say that digital modules are best defined by the contain and the operations that are performed on the data stored in them. Now, the basic architecture of the CPU is defined by the instruction set, that is machine language. Firstly, the CPU architecture is defined by the set of registers and their functions, means their capabilities to perform the different functions, and the sequence of micro operations. And what are micro operation? Basically, micro operation are those operations that are performed on the data which are stored in registers. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होती है और उन पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑपरेशंस. एंड थर्ड वन इज़ कंट्रोल सिग्नल्स दैट इनिशिएट द सीक्वेंस. कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं हमारे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट, कंप्यूटर design uses modular approach with the components at the level of registers, multiplexers, decoders and adders. And gate level design is generally limited to designing the components, although some individual gates may be used to connect larger components. And we already discussed that micro operations are the basic operations that can be performed by the system on data stored in register. And each micro operation describes a simple operation performed on data in one or more registers. Now, digital module is nothing but a combination of registers, micro operations and the control functions which control the different sequence of the micro operations. And different operations and different information which are passed through the different registers are defined in the RTL, that is Register Transfer Language. And micro operations are the operations executed on the data stored in registers, and they are detailed low level instructions used in some designs to implement complex machine instructions. Okay. Now, register transfer language. Basically, the symbolic notation used to describe the micro operation transfers amongst register is called register transfer language. जो भी माइक्रो ऑपरेशंस हम रजिस्टर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं उन सभी को हम किसके थ्रू डिफाइन करेंगे? रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज के थ्रू. बेसिकली व्हाट इज़ रजिस्टर ट्रांसफ़र? रजिस्टर ट्रांसफ़र मीन्स the availability of the hardware logic circuit that can perform a stated micro operation and transfer the result of operation to the same or another रजिस्टर. एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर ट्रांसफ़र. एंड द वर्ड लैंग्वेज इज बोरोड फ्रॉम प्रोग्रामर्स हु अप्लाई दिस टर्म to programming languages. This programming language is a procedure for writing symbols to specify a given computational process. जो भी रजिस्टर ट्रांसफ़र में हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज को हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज कहते हैं. नाउ अब काफ़ी सारे रजिस्टर्स हैं हमारे पास
जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं. There are so many registers which are used in the computer system. First one is accumulator. Basically, accumulator is the most common register which is used to store data taken out from the memory. Basically, resultant information is stored in the accumulator register. And second one is general purpose register. And general purpose registers are those registers which are used to store data, intermediate results during program execution. It can be accessed via assembly programming. And there are some special purpose registers. Users do not access these registers. These registers are for the computer system. Internal computer hardware are used this type of register. And first one is memory address register. Memory address registers holds the address for the memory unit. memory unit के जितने भी addresses होते हैं वो memory address register ही hold करके रखता है. And it is designated by name MAR. And MB are used for memory buffer register, which is used to store the instruction and data received from memory and sent from the memory. Next is PC, that is program counter. Program counter points to the address of the next instruction which is going to be एग्जीक्यूटेड. जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को होल्ड करके कौन रखता है? हमारा प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड. Now there are some symbols which are used in the register transfer language. Basically, all the registers are designated by the uppercase letters and may be optionally followed by the digits or letters to denote the function of the register. Like register name, example MBR, MAR, R1, R2, PC, IR. And next is parenthesis. Parenthesis is also a part of register. For example, if we talk about a 8-bit register, then 8-bit register is represented in the rectangular form from 0 to 7 bit, right? And 0 to 7, in the 0 to 7 bit, 0 to 3 are low level bit and 4 to 7 are high level bit. So it can be represented like PC, that is 0 to 7. It means program counter is a 8-bit register. R2L means कि R2 is a register that represent this low level bit. Okay, in the parenthesis we can show the type of the bit in the register. And now arrow basically represented the transfer from one register to another register, like R1 and R2, and our arrow goes to R2. It means the information is transferred from R1 to R2, right? And the program counter arrow goes to program counter. It shows the increment in the program counter. Now comma is basically used to separate two different simultaneous micro operation. First micro operation is represented the transfer of R1 from R2, and second micro operation is increment in the program counter, and both our micro operations are separated by comma. Okay. Now there are different operations which are performed on the register. फर्स्ट वन इज सिंपल ट्रांसफ़र. अगर हम सिंपल ट्रांसफ़र की बात करें तो सिंपल ट्रांसफ़र हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पास करनी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर.
Now in the simple transfer, both registers are there, R1 and R2, and arrow is towards R2. It means the content of R1 are copied into R2 without affecting the content of R1. It is an unconditional type of transfer operation. सिंपल ट्रांसफ़र के अंदर हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर नॉर्मली इंफॉर्मेशन का हम ट्रांसफ़र करते हैं. लाइक हेयर इज़ द R1 and R1 and here is the R2, and we transfer the information from R2 bitwise. If we define R1 is a 4-bit register, then all the 4 bits are sent to R2. Okay, one by one all the bits are transferred from R1 to R2. It is a simple transfer. Okay, एंड सेकेंड वन इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र. कंडीशनल ट्रांसफ़र वो होता है जिसके अंदर हम कंडीशन को शो करते हैं, एक कंट्रोल फंक्शन लेके आते हैं. कंडीशन क्या है? इफ़ द p इक्वल्स टू 1, अगर एक कंट्रोल फंक्शन है हमारे पास p, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, ओनली देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम R1 इज़ ट्रांसफर्ड टू R2. Here P is a control signal generated in the control section. ट्रांसफरिंग तभी होगी जब हमारे पास कंट्रोल फंक्शन P की वैल्यू 1 होगी. Right? A control function is a Boolean variable that is equal to 1 or 0, and control it is represented as P colon the information from R1 is transferred to R2. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. सबसे पहले हमारा कंट्रोल फंक्शन आएगा, आफ्टर दैट कॉलन एंड आफ्टर दैट ट्रांसफरिंग. ओके, अगर हम क्लॉक पल्स की बात करें तो हमारे पास क्लॉक पल्स है नॉर्मल इस तरीके से. राइट, अब यहाँ हम कंट्रोल फंक्शन लेके चल रहे हैं. तो सपोज एट द टाइम टी क्लॉक पल्स द कंट्रोल फंक्शन P is activated. It means the value of the control function P is 1 from this to this. Okay, from T to T plus 1. तो जो ट्रांसफ़र होगा इंफॉर्मेशन का, जब कंट्रोल फंक्शन P की वैल्यू 1 होगी, T से T plus 1 तक सिर्फ इसी टाइम पीरियड के बीच में हमारा ट्रांसफ़र होगा. कहाँ से कहाँ? R1 से R2 तक ट्रांसफ़र होगा. आफ्टर दैट P अगेन गेट्स द वैल्यू 0 एंड ट्रांसफ़र वहीं रुक जाएगा. जैसे ही P की वैल्यू 0 होगी वहीं पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगी. नाउ डायग्राम से देखते हैं हम. दिस इज़ द कंट्रोल सर्किट दैट इज़ P, कंट्रोल फंक्शन जिसकी हमने बात की. जैसे ही कंट्रोल फंक्शन P की वैल्यू 1 होगी तभी R1 से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र होगी R2 में. एंड दिस N इज़ रिप्रेजेंटेड एंड इंडिकेट द बिट्स ऑफ द रजिस्टर. अगर हम कहें कि R1 जो है वो 8 बिट रजिस्टर है, इट मीन्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है R1 से R2 का वो कितने बिट का होगा? हमारे पास 8 बिट का होगा. ओके, अगर हम कहें 16 बिट है R1 रजिस्टर के अंदर, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी 16 बिट में वो कहाँ से? R1 से R2 के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी. ओके, नाउ सी here the letter N indicates the number of bits for the register and the N outputs of the register R1 are connected to the N inputs of the register R2. Okay, a load input is activated by the control variable P which is transferred to the register R2. जैसे ही हम क्लॉक पल्स देंगे और कंट्रोल सर्किट P को एक्टिवेट करेंगे तभी हमारा क्या होगा? एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र होगा. दिस इज़ द conditional transfer from one register to
अनदर रजिस्टर। देखो आरटीएल के अंदर हमने किया कि हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसफ़र के वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल ट्रांसफ़र एंड सेकंड वन इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र। सिंपल ट्रांसफ़र के अंदर तो हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर नॉर्मली इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र करते हैं। एंड इन कंडीशनल ट्रांसफ़र हम एक कंडीशन लगा देते हैं, कंट्रोल फंक्शन लगा देते हैं। उसी कंट्रोल फंक्शन से हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अब जो भी ट्रांसफ़र होगा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर, वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, क्या क्या अलग अलग डिफरेंट वेज़ हैं उस ट्रांसफ़र को करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए R1 से R2 के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दे आर डिफरेंट वेज टू ट्रांसफ़र फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। इतना ही करते हैं आज रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक हम माइक्रो ऑपरेशंस नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।